की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो कैंसिल कर दी गई। उम्मीद थी कि शायद वो अपने कैंडिडेट्स अनाउंस करेंगे, शायद पहली लिस्ट जो है वो अनाउंस करेंगे, वो रिलीज़ करेंगे, लेकिन right now what we expect that the press conference was cancelled. All right, we will connect with our reporters soon, but as we speak, viewers, the polls in Maharashtra and Jharkhand are all set to be take place, and the schedule for the same. How many phases, in which seats, of course, the dates, everybody will be waiting for that. Two very important states, Maharashtra and Jharkhand. Maharashtra Assembly's term is set to conclude on the 26th of November, remember, while the Jharkhand Assembly term will end on the 5th of January. But the Election Commission will be announcing the dates. And in Maharashtra, the ruling Mahayuti coalition made up of the BJP, the Shiv Sena, the NCP will be competing against the Mahavikas Aghadi, that includes the Congress and the Sharad Pawar-led NCP, the Uddhav Thackeray-led Shiv Sena UBT. In Jharkhand, on the other hand, the Jharkhand Mukti Morcha, it's the part of the Indie bloc, will go against the NDA, that includes the All Jharkhand Students Union, the Janata Dal United and the BJP. Remember, the BJP is expected to release its first candidate for the Maharashtra, candidate list for the Maharashtra polls also in the next 2 days, as in fact there have been meetings, there has been a press conference that was cancelled before this important announcement of the dates of the polls by the Election Commission. And remember, BJP's National President JP Nadda, Home Minister Amit Shah, all held a marathon meeting yesterday in New Delhi, with the key leaders from the party's Maharashtra unit, two state election in charges, Bhupendra Yadav and Ashwini Vaishnav also. And the party's Maharashtra unit has finalized at least 100 candidates. It includes the sitting MLAs for the CEC to choose from. And of course, a lot depends now on the dates that will be announced. And we will continue to get you the latest as soon as the press conference begins. In just a few minutes from now, viewers, in just a few minutes from now, we'll get you the live press conference as the poll dates will be announced by the Election Commission. Don't go anywhere. Stay tuned. Amity has been ranked India's #1 not-for-profit private university for 11th year, with top 10 ranked institutions in management, engineering, biotech, law, masscom, telecom, hospitality, fashion and more. Yet another top ranking for Amity University. कानून से किसी को भी खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं है। जो भी दोषी होगा, जांच चल रही है, कड़ी कार्रवाई होगी। परिस्थिति सामान्य है और दोषियों की पहचान की जा रही है। All right, viewers, we are getting in visuals, live visuals coming in from West Bengal's Dharmatala
as now the Calcutta High Court has provided a setback to Mamata police once again, favouring the doctors for the Droha Carnival. Calcutta High Court has given the permission, remember, for the Droha Carnival, which will be now staged by the protesting doctors from 4 p.m. These are visuals from Dharmatala. And at this hour, the immersion carnival conducted by the government, like every year, will start from the Red Road as well. And this, of course, the Calcutta High Court's order granting the permission for the Droha Carnival for the protesting doctors comes as a blow to another setback to the state government led by Mamata Banerjee. And after High Court's permission, you can see the police opening the barricades, removing the barricades, as they had earlier denied the permission. My colleague Kisholai joins live in the broadcast from Kisholai. Well, we can see that doctors continue their protest. They are enraged, they are outraged, and as the Calcutta High Court has also, ruled in favour of the protesting doctors, we see that the Kolkata police now is removing the barricades, making way for the protesters to exercise their right to protest and hold the Droha Carnival. Lakshita, exactly. At one hand, we have the carnival of Durga Puja by West Bengal government. On the other hand, we have this Droho Carnival or the Carnival of Protest. I'll try to hear what the people are saying as well and translate as and when we get the feed. Till then, I'll be speaking. So we are getting live visuals from Esplanade area, Rani Rashmoni area, where the Kolkata police had put up huge barricades, and those barricades were put up to stop the Droho Carnival, or which also means or translates into Carnival of Protest. So the Carnival of Protest was arranged or organized by junior doctors, senior doctors and common people who are protesting against the state government about the Arjikor issue. Now the Kolkata police and state administration had put huge barricades all over the area to stop these rallies from entering the area where Puja Carnival will happen, which is organized by the state government of West Bengal. Right now we are getting live audio, if I can hear that. So that's our reporter Elena speaking, where she's saying that common people in that area are very happy who are taking part in that protest. They are saying that it is a natural way of showing a protest where we will be coming down on streets and taking out rallies. That is our democratic right. Why the state government was trying to stop us, and now they have been pulled up by the High Court, where the High Court very clearly has mentioned that this Droher Carnival should not be stopped and they should be moved till a particular distance where they want to go, till Dharmatala. So the plan was to walk till Dharmatala from various points, or Esplanade from various points. And on the other hand, we know at Red Road, there is this carnival of Durga Puja, which is arranged by the state government. So the state government, Mamata's government had this worry. A very good afternoon, all of you. I welcome you all to this press conference by the Election Commission of India to announce the schedule for the State Assembly elections in Maharashtra and Jharkhand. We have with us on the dais Honorable Chief Election Commissioner Shri Rajiv Kumar ji, Honorable Election Commissioners Shri Gyanesh Kumar ji and Dr. Sukhbir Singh Sandhu ji. We also have with us on dais Senior Deputy Election Commissioners and Deputy Election Commissioners of the Election Commission of India. I am Anuj Chandak, Joint Director Media for the Election Commission. The format of the press conference will be as follows. There will be a brief address by the Honorable CEC along with a very informative presentation. The copy of presentation will be shared with you along with the press note and all of the details after the press conference conclude. After the address by Honorable CEC, we will be having a question and answer session. I would request all of you to kindly raise your hand and the mic will come to you. Kindly introduce yourself, your name and organization, and ask your question. Thank you so much. Now I would request Honorable CEC to kindly address the media. माननीय निर्वाचन आयोग श्री गणेश कुमार जी on my right side, निर्वाचन आयोग डॉक्टर सुखबीर सिंह जी संधू on my left, आयोग के वरिष्ठ अधिकारीगण और मीडिया के सभी फ्रेंड्स,
और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जुड़े हुए सभी हमारे वोटर्स, आप सबका इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। We welcome you all at this press conference, which is about the declaration of the schedule for the ensuing state assembly elections in Maharashtra and Jharkhand. Friends, मैं इस वार्ता को शुरू करने से पहले चुनाव आयोग की तरफ से और आपके माध्यम से सर्वप्रथम हरियाणा और जम्मू कश्मीर के सभी मतदाताओं को, वोटर्स को चुनाव में बहुत ही सशक्त, दमदार पार्टिसिपेशन के लिए मुबारकबाद देना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर की आवाम ने जमहूरियत के जश्न को ऐतिहासिक बना दिया। भारी संख्या में पार्टिसिपेट कर अपने जमहूरी हक का शानदार उपयोग किया और जिसने लोकतंत्र की मजबूत नींव रखी है। दुनिया में सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत हर चुनाव में गोल्ड स्टैंडर्ड्स तय कर रहा है, रिकॉर्ड बना रहा है। इन दोनों चुनावों में जो जज्बा दिखाया गया वो लंबे समय तक याद रहेगा। आप सबको वो पिक्चर्स, वो माहौल निश्चित रूप से याद रहेगा। जम्मू कश्मीर की आवाम ने जमहूरियत के जश्न में लोकसभा चुनावों में जो बुनियाद बनाई थी, उस पर एक बहुत ही सशक्त इमारत असेंबली इलेक्शंस में लिखी है और इस जनादेश ने नई आशाएं और उम्मीदों को संचार दिया है। नाउ इट इज ओवर टू द पीपल ऑफ J&K टू टेक दिस डेमोक्रेटिक जर्नी फॉरवर्ड। और हम एक नया गोल्ड स्टैंडर्ड और सेट कर रहे हैं। जस्ट टू रिमाइंड यू, जस्ट टू रिकॉल, चुनाव घोषणा के समय ही हम अपना इरादा घोषित करने लगे। हम अपनी विल और इंटेंट को पहले बताते हैं और उसे पूरा करके दिखाते हैं। जस्ट टू टेक यू डाउन द मेमोरी लेन, लोकसभा के चुनाव के समय, अनाउंसमेंट के समय हमने वादा किया था कि हम 4M की चुनौतियों से निपटेंगे और हिंसा, पुनर्मतदान, धन और सोशल मीडिया के दुरुपयोग की अनुमति नहीं देंगे। और आप सब जानते हैं कि हमने वो करके दिखाया। भारत के चुनावों की गोल्ड स्टैंडर्ड्स की कड़ी में हम एक और नया अध्याय लिख रहे हैं। इसी को आगे बढ़ाते हुए J&K अनाउंसमेंट के समय अगर मैं आपको फिर से याद दिलाऊं कि चुनाव से पहले किस प्रकार की थ्रेट्स थीं, आतंकी हमले बढ़ रहे थे। लोग, आप सब लोगों में से बहुत लोग ये भी पूछ रहे थे कि पता नहीं चुनाव आयोग J&K में चुनाव कराएगा कि नहीं कराएगा। और 16 अगस्त को जब चुनाव की घोषणा का समय था, तो इसी प्लेनरी हॉल में हमने अप फ्रंट और बोल्ड वादा किया था। और मुझे याद है मैंने कहा था कि जमहूरियत के जश्न में आपकी शिरकत दुनिया देखेगी नापाक इरादों की शिकस्त की कहानी। और वो कहानी आपने सबने देखी और वो कहानी पूरे वर्ल्ड ने देखी। चुनाव को इंड्यूसमेंट फ्री बनाया गया और जहां J&K में चुनाव कराने का विषय होता था, वहां सीजर्स में 130 करोड़ रुपए के सीजर्स हुए, विच इज 100 टाइम्स मोर देन 2014 इलेक्शंस। तो पहले ये बात भी नहीं होती थी कि सीजर्स भी करना है, इस पावर को रोकना भी है। सिमिलरली इन हरियाणा, सीजर्स वर टू द ट्यून ऑफ अराउंड 75 करोड़, 4 टाइम्स मोर देन 2019 इलेक्शंस। इन दोनों राज्यों के चुनावों में भी नील रीपोल रहे। देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल रीपोल इन बोथ द स्टेट्स, इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। कोई वायलेंस नहीं हुई, जीरो वायलेंस, इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। एक भी लाठी नहीं चली, एक भी गोली नहीं चली। आप सब इस बात के गवाह हैं। आपने देखे शिकस्त के नजारे। एंड लेट अस गिव एन ओवेशन टू द वोटर्स ऑफ जम्मू कश्मीर एंड हरियाणा। चुनाव दर चुनाव घटती हुई हिंसा, बढ़ती भागीदारी, रिकॉर्ड सीजर्स, मतदाता बिल्कुल स्पष्ट संदेश दे रहे हैं that they have full belief, they are very participative in the electoral process। लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी अगर मुझे याद आए तो कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है क्या। हम उसके बिना चिंता किए आगे बढ़ते हैं, अपना काम सशक्त तरीके से करते हैं, ये आपको विश्वास दिलाते हैं। सो फ्रेंड्स, नाउ वी कम टू महाराष्ट्र एंड झारखंड, जहां पर अब उत्सव का समय है। हाल ही में हमने झारखंड और महाराष्ट्र में विजिट की थी और वहां पर पॉलिटिकल पार्टीज, डीओज, एसपीज, आईजीज, कमिश्नर्स, एनफोर्समेंट एजेंसी सबके साथ बैठक की थी और पूरे व्यवस्था को
समझा और उसका रिव्यू किया था. So before we come to the schedule, let me share some basic information about these two states with you. Total districts in Maharashtra 36 with 288 assembly constituencies, of which 234 are general and scheduled tribes constituencies 25 and SC constituencies 29. Term of the Assembly of the Maharashtra is ending on 26 November 2024. If we talk about the number of electors in Maharashtra, they are 9.63 crores, 4.97 crores male and 4.66 crores female voters. Young voters की संख्या जिस पे काफी जोर दिया गया था SSR में 1.85 crores और उसमें से 20.93 lakhs are first time voters of 18 to 19 age group. If we tell you about the polling stations in Maharashtra, there are total 1,186 polling stations and at 52,789 locations. Urban being 42,604 and rural being 57,582. इस बार भी हम PWD मैनेज्ड बूथ्स बनाएंगे, विमेन मैनेज्ड बूथ्स बनाएंगे महाराष्ट्र में भी. मॉडल PSS की संख्या 530 रहेगी. अगर झारखंड में की चर्चा करें तो टोटल डिस्ट्रिक्ट्स की संख्या है 24, टोटल असेंबलीज 81, जिसमें से जनरल 44, STs 28 एंड SCs 9. झारखंड की असेंबली का टर्म 5 जनवरी 2025 को कंप्लीट हो रहा है और अगर झारखंड में इलेक्टर्स की बात करें तो 2.6 करोड़ वोटर्स, जिसमें 1.29 करोड़ फीमेल एंड 1.31 करोड़ मेल. फर्स्ट टाइम वोटर्स बिटवीन 18 to 19 years are 11.84 lakh and 66.84 young voters in Jharkhand also. In the centenarian, number of centenarian voters is 1,706 and 3.67 lakhs PWD voters plus 1.14 lakh voters are of the age of 85 and plus in Jharkhand. If I give you an overview of polling stations in Jharkhand, पूरे पोलिंग स्टेशंस की संख्या होगी 29,562 और जो कि 20,221 लोकेशंस पर फैले हुए होंगे. अर्बन संख्या वहां कम है 5,042 और रूरल परिवेश ज्यादा है, इसलिए रूरल बूथ्स की संख्या होगी 24,520. यहां पर भी विमेन मैनेज्ड बूथ्स, यूथ मैनेज्ड बूथ, PWD मैनेज्ड बूथ्स बनाए जाएंगे. एवरेज वोटर्स की संख्या पर बूथ इज 881. पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स पे जैसे मैंने पहले भी आपसे चर्चा की है, कमीशन का उनको एनरोल करने के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए बहुत एम्फेसिस है. महाराष्ट्र में 3 PVTGs हैं, कटकरी, कोलम एंड मारियागौंड, और झारखंड में 8 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं जिनकी आबादी 1.78 लाख है. उसमें असुर, बिरोर, मालपाड़िया, पहाड़िया, सौर्या, पहाड़िया, बिरजिया, कोवार एंड सावर, इन सबका लगभग 100% एनरोलमेंट इलेक्टरल रोल में किया गया है. सभी DOs ये कोशिश करेंगे कि जो भी बूथ्स इनके यहाँ बने वो बहुत सहज इनके ही परिवेश में बने और इस तरह की स्वीप एक्टिविटी करें कि वो सबके सब अधिकतर मात्रा में अपने मतों का प्रयोग कर सकें. मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं कि सभी पोलिंग स्टेशंस पे एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज होंगी. पिछली बार मुंबई शहर से कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन या शिकायतें आई थी कि वहां पर कुछ बूथ्स पे ज़्यादा पोलिंग स्टेशंस एक जगह होने की वजह से प्रॉब्लम थी. इस बार हमने रिव्यू में बहुत ही सख्त हिदायतें दी हैं, उनको रिव्यू किया, रेशनलाइज किया गया है पोलिंग स्टेशंस को. तो हम उम्मीद करते हैं DOs विल वर्क और वहाँ इस बार म्युनिसिपल कमिश्नर मुंबई को DO भी घोषित किया गया है ताकि जितने रिसोर्सेज उनके पास हैं उन सबको वो उसमें इस्तेमाल कर सकें. एक और व्यवस्था की गई है जो हम पीछे से कोशिश कर रहे थे, अब हमने उसकी इंस्ट्रक्शंस भी इशू कर दी हैं.
कि पोलिंग लाइन जब लगती है तो उसमें लाइन के बीच में भी थोड़ी कुर्सियां या बेंच लगाएं, ताकि अगर आधा घंटा लग रहा है तो बीच बीच में कहीं ना कहीं 5-7-10 मिनट के बाद आप 2-3 मिनट के लिए बैठ जाएं तो थोड़ा अच्छा लगता है, मतलब थकान थोड़ी कम महसूस होती है, खासतौर से बुजुर्ग लोगों को। तो ये व्यवस्था भी सब पोलिंग स्टेशंस पे रहेगी। Friends, if I come to the next, ease of voting for senior citizens PWDs, this will be followed. You have all the experience of the pan-India coverage of facilities for the persons with disabilities and senior citizens. हर senior citizen जो 85 years से ऊपर हैं, उनको घर से वोट देने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। फॉर्म 12D वितरित किए जाएंगे सबको, और जो भी उसको भर के देते हैं उनके पास में हमारी टीम वोट लेने जाएगी, और जाने के समय में सभी कैंडिडेट्स को लिखित में उस रूट चार्ट का और उस जगह की सूचना देगी, ताकि वो साथ में एकम्पनी कर सकें और उनको ऐसा महसूस ना हो कि किसी के घर पर किसी ने प्राइवेसी ऑफ द वोट को नहीं मेंटेन किया। दे आर एंटाइटल्ड, दे आर वेलकम टू पार्टिसिपेट एंड गो along with the polling parties to the houses of the senior citizens and PWDs. और पूरी जो व्यवस्था है उसकी वीडियोग्राफी ऑफ कोर्स गोज विदाउट सेइंग विल बी डन, सो दैट देयर इज ए फुल प्रूफ रिकॉर्ड। वैसे भी पूरे चुनाव में आप जानते हैं कि कोई भी प्रक्रिया ऐसी नहीं है जिसमें वीडियोग्राफी ना होती हो, जिसका रिकॉर्ड ना रखा हो, सो दैट जहां पर कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट ना करते हो और जहां पर वीडियोग्राफी ना होती हो। सो एवरी प्रोसेस ऑफ दिस कैन ऑलवेज बी चेक्ड एंड सीन। जैसे क्रिकेट में एक्शन रिप्ले होता है, तो अगर वहां गेम के समय एक्शन रिप्ले नहीं हो सकता तो बाद में हर जगह हर प्रोसेस की वीडियोग्राफी को देखा जा सकता है। इसी प्रकार से जो नेक्स्ट अगर मैं आपको बताऊं तो जो टेक्नोलॉजी है उसका हम फिर से बहुत यूज करेंगे। वोटर हेल्पलाइन ऐप में सभी वोटर्स अपनी सारी डिटेल्स देख सकते हैं, वो कहाँ मतदाता सूची में कहाँ नाम है, कहाँ फैमिली टुगेदर है, कहाँ उनको पोलिंग स्टेशन है, वो सब चीज़ देख सकते हैं। सी विजिल ऑफ कोर्स वी हैव बीन वेरी एंथ्यूज्ड। जैसे लास्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शन में हमारे 10,000 करोड़ के सीजर्स हुए, जैसे मैंने अभी बताया J&K एंड हरियाणा में भी रिकॉर्ड सीजर हुए। वी आर श्योर दैट इन झारखंड एंड महाराष्ट्र ऑल्सो द वोटर्स द enlightened voters will inform us on C Vigil about any malpractice which they notice in their area, and we will reach there in 90 minutes to handle it. सभी कैंडिडेट्स जिनकी क्रिमिनल बैकग्राउंड है उन्हें अपनी सूचना देनी पड़ेगी 3 बार पेपर्स में, और सभी वोटर्स एज ए मैटर ऑफ राइट कैन सी ऑन आवर ऐप विच इज KYC नो योर कैंडिडेट। हमने जो मीटिंग्स, मैं आपको सिर्फ सारांश में ये बताना चाहता हूं कि जो मीटिंग्स हमने झारखंड और महाराष्ट्र में की, तो DOs स्टेट एजेंसीज को बहुत ही सख्त हिदायतें दी हैं। मतलब बहुत ही सख्त मीन्स बहुत ही सख्त, कि वो हर तरीके से फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराएंगे, हर तरीके से लेवल प्लेइंग फील्ड को एस्टेब्लिश करेंगे। उनको ये स्पष्ट बताया गया है कि किसी भी पदाधिकारी के विरुद्ध अगर ऐसी सूचना आती है और ये प्रमाणित होता है कि उन्होंने कोई भी कार्य ऐसा किया जिससे लेवल प्लेइंग फील्ड डिस्टर्ब होती है, एक पार्टी को पक्ष एक पार्टी को नुकसान, तो वेरी स्टर्न एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट देम। दिस हैज बीन वेरी वेरी क्लियरली टोल्ड टू एवरीवन। किसी भी तरीके का प्रलोभन, वही 4 M's जो पहले हमने बात की थी, मनी का डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीबीज का डिस्ट्रीब्यूशन, शराब का डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रग्स का डिस्ट्रीब्यूशन विल ऑल बी अंडर स्ट्रिक्ट वॉच। ऑल एयरपोर्ट्स, all landings of the aircrafts in the field will all be checked. There would be extensive polling, the checkposts on the borders of the interstate for checking interstate movement, और कहीं से भी मल्टी डिसिप्लिनरी टीम्स वहाँ बनाने के लिए कहा गया है, यानी जिसमें एक्साइज भी होगा, पुलिस भी होगी, GST भी होगी, ट्रांसपोर्ट के भी लोग होंगे, ताकि वो 24/7 उनकी चेकिंग कर सकें। और साथ में ये भी हिदायत दी गई है कि चेकिंग का मतलब ये नहीं है कि कॉमन सिटीजन को कोई भी हैरेसमेंट होना चाहिए। दैट प्रिकॉशन मस्ट वेरी वेरी केयरफुली बी टेकन अबाउट ऑल ऑफ देम।
सभी पोलिंग स्टेशंस 2 किलोमीटर के अंदर हों। किसी भी कंट्रोल रूम्स की स्थापना होगी हर डिस्ट्रिक्ट में, so that they can handle the social media narratives if there is anything which is wrongly being conveyed. ये सब का सब वहाँ पर निश्चित रूप से व्यवस्था होगी। सारांश में, if I summarize everything before coming to schedule, I would like to say that चुनाव लोकतंत्र का ऐसा त्योहार है और ऐसा उत्सव और पर्व है जिसमें सभी वोटर्स की भागीदारी बिल्कुल आवश्यक है, वांछनीय है, आवश्यक है, रिक्वेस्टेड है। वी अपील टू एवरीवन टू कम एंड वोट इन लार्ज नंबर्स इन दीज इलेक्शंस ऑल्सो। साथ ही सभी राजनीतिक दल, सभी कैंडिडेट्स से भी अनुरोध है कि पूरे नियमों का पालन करते हुए कैंपेनिंग के दौरान निर्भय होकर कैंपेनिंग करें। लेवल प्लेइंग फील्ड एस्टेब्लिश करना हमारा काम है, लेकिन उसको वायलेट ना हो, उसमें कोई एक्सेसेस ना हो, ये उनका भी काम है। नाउ आई कम टू द शेड्यूल फॉर महाराष्ट्र। दिस विल बी इन सिंगल फेज। द notifications, date of notifications are in front of you. 22nd October would be date of notification. Last date of making nomination would be 29th October. Scrutiny on 30th October. And last date for withdrawal 4th, and date of poll in Maharashtra would be 20th 11. Counting would be on 23rd 11 24, and you will notice that date of poll is Wednesday. This is deliberately, which lot of scheduling, whatever goes into scheduling, we have tried that it is midday, so that issue of urban apathy is handled. And in case of urban apathy, we are really very concerned. We want to make appeal through you to all our esteemed voters in the urban areas to please come and vote. It's not a healthy trend which is reflected. If I give you a brief of what is happening across the elections in the urban apathy, we will share this slide with you. If you look at various states, you look at Gurgaon, you look at Faridabad recently. Last elections, you look at Jubilee Hills, Hyderabad. You look at Bangalore South. You look at Gujarat, Gandhigram, Kolaba, Mumbai City, Pune, Thane, all are much below the state averages of each state. We will be conducting a special meeting of the municipal commissioners and DOs within a week's time to appeal again to do whatever we can do to motivate the voters in the urban areas, but the trends are really not good. If I show you the Lok Sabha, that was the Lok Sabha. If I show you legislative assemblies, see the lowest. The Kolaba was just 40%. 62 of 64 urban ACs in Maharashtra were less than the state average in 2019. So was the case in the parliamentary elections 2024 also. And just to give you a contrast, if you compare, so what was the situation in Lok Sabha in Kalyan was 50%, Mumbai South 50%, Mumbai North, Thane, Pune, Mumbai South, everything 53%. And these were the lowest 6 parliamentary constituencies out of the lowest 10. So that's the state of the urban apathy. We would be doing everything to counter it. Last time in 24 elections, we had all celebrities, all corporates, Amul, everyone involved. We'll do it again. And we'll also, at this point, emphasize that this contrasts with a very positive trend in the constituencies like Doda, 72%, Riyasi, 74%, Punch, 74%, Rajouri, 71%. If they can go 70 plus, Kolaba can also go 40 plus. In 24 Lok Sabha elections, Bastar was 68%, 69%. Gadchiroli, Manipur, states after state, tough areas. So we'll be requesting through you
we'll have a special drive this time for the slum areas in urban areas and also the colonies, all alike, to have a real urban push. I do not want to name a specific thing, but there are booths in Faridabad and Gurgaon in the recently held elections, and they are the poshest places where voting has been around 20%. So again, we will be doing a lot of work on this to do whatever we can do to attract the urban voters. Now, friends, coming to Jharkhand. झारखंड एक बहुत ही समृद्ध स्टेट है, बहुत ही उसकी विरासत है, और वहाँ पर हम फिर से अपील करेंगे कि सब वोटर्स अधिक से अधिक मात्रा में वोट दें. शेड्यूल वुड बी लाइक दिस. झारखंड वुड बी इन 2 phases. The date of poll, first phase would be on, date of poll would be on 13th November, and the second phase would be along with Maharashtra on 20th November. So the date of issue of notification for Jharkhand phase 1 would be 18th, and for phase 2 would be 22nd along with Maharashtra. Nominations for phase 1 would be till 25th of October, and for phase 2, 29th. This slide we will share with everyone. And date of poll would be 13th November and 20th November, both Wednesdays. And date of counting would be 23rd 11, that is Saturday. With this, we end our presentation with the request that through you, that all the voters of Jharkhand and Maharashtra कृपया बाहर आइए, कृपया वोट करिए. लोकतंत्र के उत्सव में आपकी भागीदारी कि हम बहुत ही रिक्वेस्ट करते हैं, अपील करते हैं आपसे. थैंक यू वेरी मच. So bye. So we will come back. We'll come back. So, okay. Sorry. By elections also. By elections. We have 48 ACs and 2 PCs in 15 states. They will also undergo the elections this time. All the 48 ACs and 2 PCs, the schedule would be like this. All the except 1 AC and 1 PC, where because of the festivities in some region, all 47 ACs and 1 PC of Kerala would undergo the election along with the phase 1 of Jharkhand. The same schedule. 13th November would be date of poll. And only for 2 ACs, one for Assembly and one for Parliament. That is Kedarnath in Uttarakhand, because on 12th there is gazetted holiday and dispersal of the parties takes place on that day. Therefore, it is on 20th. And similarly, all right, so the poll dates have been announced for both Maharashtra and Jharkhand, and as we understand that the Jharkhand elections will happen in 2 phases, whereas Maharashtra will happen in a single phase. Maharashtra, where the polling will be on the 20th of November and the results will be on the 23rd of November, whereas in Jharkhand, 13th and 20th are the polling dates and 23rd November is when the results will be announced. We step into a short commercial break right now. We'll be back on the other side with all the big stories, so stay tuned. Director, the taste of success.
Asia's largest news headquarters, setting the agenda for Bharat. You're watching Republic. The stage is set for the mega electoral battle as the Election Commission announces dates for Maharashtra and Jharkhand Assembly elections. Maharashtra to go for polls in single phase on 20th November, while Jharkhand in two phases on the 13th and the 20th of November. Counting of votes on the 23rd of November. External Affairs Minister Dr. Jaishankar lands in Pakistan to participate in the SCO meeting in Islamabad, may attend dinner with Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif. It is obvious that the government of India made a fundamental error in thinking that they could engage in supporting criminal activity against Canadians here on Canadian soil. Canadian Prime Minister alleges Indian government agents involved in the spread of criminal activity. But where is the proof, Mr. Trudeau? Amid pan-India outrage, TMC's Kalyan Banerjee mocks the doctors' protest, says this is fast onto hospitalization strike. In a major boost for the armed forces surveillance capabilities, India and the United States are all set to sign a 32,000 crore rupee deal for acquiring 31 Predator drones. Viewers, right ahead of Election Commission's announcement for the dates of elections in Maharashtra and Jharkhand, which has happened just now, the Congress, even before the announcement was made, started to raise the EVM bogey and also started alleging that the BJP and the Election Commission of India are in collusion. That there's a collusion between the BJP and the EC, and raising concerns over the fairness of the electoral process. This was just before the announcement of the election date, viewers. And in response, the Chief Election Commissioner strongly countered the claim, saying that the EVMs are 100% fair and cannot be tampered with. The CEC assured the voters that the system remains transparent and secure amidst the ongoing political accusations. Meanwhile, the BJP slammed the Congress, calling out the Vadra Congress's nervousness ahead of the Assembly elections. Listen in. सवाल का जवाब पब्लिक देती है। वोटिंग में परसेंटेज और वोटिंग में पार्टिसिपेट करके पब्लिक जवाब देती है सवाल का। जहां तक ईवीएम्स और इन सब का प्रश्न है, वो 100% फुल प्रूफ है। मैं कई बार बता चुका हूं। फिर आज अगर ये प्रश्न उठेगा तो फिर बताएंगे वहां पर। देखिए, महाराष्ट्र के अंदर अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है, जिसकी उम्मीद मुझे बहुत कम, तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। लेकिन आज बड़ा सवाल है कि इलेक्शन कमीशन किस तरह। Viewers, we are cutting across to live visuals coming in from Pakistan. There you can see Dr. Jaishankar landing in Islamabad there, along with the delegates, along with those who have received him for the SCO summit. And remember, almost after 9 years, we see a foreign minister of India landing in Pakistan. Last was Sushma Swaraj back in December 2015. Now we have Dr. Jaishankar at the SCO meeting. He touched down a while back, and these are the visuals coming in from Islamabad. And after this, there is a dinner meeting that we expect where the Prime Minister of Pakistan, Shehbaz Sharif, will also be facing Dr. Jaishankar, and the SCO meeting will be kick-starting with that dinner hosted by Shehbaz Sharif.
And Jaishankar is expected to join. The External Affairs Minister of India, Dr. Jaishankar, is expected to join that meeting. A welcome dinner hosted by Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif for the delegates who have converged at Islamabad in Pakistan. And remember, both sides have ruled out, both India and Pakistan have ruled out any formal bilateral meeting on the sidelines of the SCO event. The minister is expected to participate, however, in this dinner and exchange pleasantries with the Pakistani counterpart Ishaq Dar, or even perhaps Shehbaz Sharif before the main summit. We saw just the same way as we saw Bilawal Bhutto Zardari when he was in the country for a meeting, for a summit. Now, even though it won't be a fleeting visit that was previously thought, Jaishankar will spend not more than a day in Pakistan before he flies back to New Delhi. But these are the visuals as we speak. First on Republic TV, the External Affairs Minister, Dr. Jaishankar, landing in Pakistan, landing in Islamabad, getting a warm welcome. Even some kids there. And there's lots on the agenda. If you talk about, viewers, the SCO meeting, there is going to be, again, no bilateral, but Jaishankar is going to lead India's charge. Talks will be focusing on trade and economy. So this is a crucial meeting. And the 23rd meeting of the SCO, the Shanghai Cooperation Organization, Council of Heads Government, and it's scheduled for tomorrow. The business end of the things will be witnessed tomorrow. It's a crucial gathering concentrating on the bloc's trade and economic agenda, important moment for the regional cooperation, and it has, of course, sparked many speculations about India-Pakistan relations. But Jaishankar had made it very clear that the primary purpose for him deciding to going to Islamabad is to engage in discussions related to the SCO, not Indo-Pak talks. He said that I'm traveling to Pakistan solely as a good member of the SCO. Talking about the multilateral, he in fact stressed upon the multilateral nature of the event. And remember, this SCO meeting will be chaired by Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif. My colleague Kaswar Klasra joins us live on the broadcast from Islamabad. We're getting visuals of Dr. Jaishankar, Kaswar, from Islamabad, and he has touched down. And he's all smiling right now. And after this, we expect there will be a dinner in the evening for the delegates. And there is an expectation that pleasantries will be exchanged between Dr. Jaishankar and his and his Pakistan counterpart, and even Shehbaz Sharif. Yeah, that is true. Jaishankar has arrived, and remember that Republic was the first news channel which broke the story of his arrival here. And let me tell you that, as you have rightly pointed out, he was fresh, he was smiling, and it appears from his body language that he was attending to the SCO summit in Islamabad on a very, very positive note. Can you hear me? Yes, please go ahead. Carry on, Kaswar. From his body language, it appears that Jaishankar is going to attend the summit on a positive note. Remember that day before yesterday, he very clearly told the reporters that he will be attending the SCO summit, but he will not discuss any bilateral issue. Definitely, we all know that the SCO summit is all about the regional issues. And today, we are actually getting the story that he has arrived. And let me tell you that even though that the prime ministers of several countries have actually landed in Islamabad to attend the summit, but Jaishankar will be under the limelight. And according to what I have spoken to the Pakistani official, they told me that a number of prime ministers are here, Chinese prime minister is here, a delegation from Russia is here, but still the limelight will be on Jaishankar. So he is going to be a very important guest
and definitely he is going to attend the dinner being hosted by the Prime Minister of Pakistan, Shehbaz Sharif. And day before yesterday, the interesting development came in that former three-time Prime Minister Nawaz Sharif actually set the tone of SCO meeting. He said that Pakistan is looking forward to have very cordial and very good relationship with India as well. So in the background of all these step and information, I can tell you at good authority that no possibility of bilateral talks between Pakistan and India, but Jaishankar will be attending the summit on a very, very positive note. That is actually the main agenda of SCO summit in Islamabad as well. Right. Right, Kaswar. In fact, it's an important multilateral event, as Jaishankar has put it before he announced that he is indeed going. He confirmed that he's going. But tell us more about the focus of this entire summit, that there will be, of course, a central focus on trade and, of course, cooperation in terms of business, in terms of finance, in terms of course, economy, as far as the agenda will be concerned tomorrow. Well, yes, definitely. These are the issues which all of the members of Supreme Court, the Shanghai Cooperation Organizations are facing. But you have forgotten to mention the important issue of terrorism as well. Today, as it is going to be the first day of the summit, Pakistan has to face another suicide attack, and according to my information, 6 policemen had to lost their lives and many were injured in the Banu district of Khyber Pakhtunkhwa. So Pakistan is also actually facing such type of horrors as well. So terrorism, finance, and other bilateral issues, multilateral issues will be under discussion. And remember that the members of this SCO actually comprise of 40% of total population of the world. So it is going to be a very, very big and huge, the regional summit, and 40% of the total population of world lives in the countries who are actually part of this SCO. So it is going to be a very important summit that have kicked off today. So as you have rightly pointed out, that finance, terrorism, and other issues will be on the agenda, but we will have to wait until the host country, Pakistan, will reveal the agenda of the SCO summit. So definitely terrorism and other issues are going to be on the agenda as well. Absolutely right. Thank you so much, Kasper, for joining us with the updates coming in. Of course, the business end of this summit will be taking place tomorrow. We'll keep coming back to you for more updates on that, viewers. But right now, we shift our focus to some breaking news coming in right now, viewers. This in connection with an emergency landing of an Air India Express flight in Ayodhya. And this again, once again, we see a bomb scare in one of the domestic flights, Air India Express flight is now making an emergency landing in Uttar Pradesh's Ayodhya airport following the bomb threat. This as per the statement of the airport director Vinod Kumar. And we do not know yet what has been ascertained in terms of who sent this mail. But Air India Express has made an emergency landing in Ayodhya at the Ayodhya airport. It was Ayodhya-bound Air India Express flight that got the bomb threat, and in fact, I believe, got a bomb threat via social media. And a Boeing 737 MAX 8 aircraft with call sign landed at UP's Ayodhya airport this afternoon. It is currently parked in an isolated bay area of Ayodhya airport. And a combing operation is underway by the bomb disposal squad and the dog squad. This comes a day after an Air India flight from Mumbai to New York was redirected to Delhi due to a bomb threat. Raghavendra joins us on the phone line for more. Raghavendra, this is coming in right a day after Air India flight from Mumbai to New York was redirected to Delhi due to a bomb threat. And now an Air India Express flight makes an emergency landing due to a bomb threat. What are you learning?
देखिए आप गाड़ी गलौज सेंटर फिर पूछी माँ बताओ कौन सी गाली सीखी है मोटी माँ का बोलता। Viewers, Air India Express flight making an emergency landing in Ayodhya. We seem to have not connected with a reporter. We'll try and reconnect. Emergency landing due to bomb threat, and this is coming in once again after there was a bomb threat received on an Air India flight. This is an Air India Express flight. That was an Air India flight that was bound to New York. And remember, there have been multiple bomb threats targeting airports recently, many of which were false. And even on the 5th of October, there was a bomb threat email at Indoor's Devi Ahilyabai Holkar International Airport. And Vadodara Airport had also received a bomb threat on the 5th of October that led to a thorough search. And right now, as we speak, the combing operations underway in Ayodhya. Some more news from Uttar Pradesh now, viewers. The Chief Minister Yogi Adityanath on Tuesday met with the family members of the 22-year-old man killed in violence in state's Bahraich district 2 days back. Now, Ram Gopal Mishra's family members met the Chief Minister in Lucknow. The local BJP MLA Sureshwar Singh was also present during this meeting with the Chief Minister. And after meeting Yogi Adityanath, Mishra's brother demanded strict action against those who shot dead the victim. The UP government also announced a compensation of 10 compensation for the family of the victim. And to the right side of your screen, you can see the inconsolable parents, the family members meeting Chief Minister Yogi Adityanath. Take a listen to this report filed by my colleague on Crime Zero. दुर्गा विसर्जन के दौरान कल जब रात में राम गोपाल मिश्रा की हत्या की जाती है, उसके बाद का यहाँ का जो माहौल है वह काफ़ी मातम में बदल जाता है। चारों तरफ पुलिस लग जाती है, आक्रोशित भीड़ महाराजगंज में आने लगती है और सुबह होते होते यहाँ पर काफ़ी कुछ बवाल भी होता है। काफ़ी घर और जो गाड़ियाँ हैं वह जलाई जाती हैं। अलग अलग दुकानों में भी आगजनी की घटना आपने खुद ही देखा है। लेकिन मैं उस घर पे मौजूद हूँ जहाँ पे हत्या हुई थी, उसके बगल वाला घर है जहाँ पर मैं हूँ। और मैं ऐसे ही अपने सहयोगी से कहूँगा कि थोड़ा सा हाथ उठा के यहाँ के दिखाएं। ये वही छत है जहाँ पे कल जो राम गोपाल मिश्रा युवक था उसने झंडा लगाने की कोशिश की थी। और आप देख सकते हैं कि छतों पे किस तरह से शीशियाँ टूटी गई हैं, तोड़ी गई हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ग्रीन कलर की ये शीशी है, कांच की शीशी है, वाइट कलर की शीशी है, ये सब तोड़ी फोड़ी गई हैं। और उसी कोने से उसको खींच के अंदर ले जाया गया। कहा जा रहा जो शव है बाद में शायद इसी छत से होते हुए इसको उतारने की कोशिश यहाँ से की गई थी। मतलब पहले ये लोग गाली गलौज किए हैं मुस्लिम लोग। हाँ, कुछ भवा के बाद और दूसरा क्या है कि पथराव भी हुआ है। पथराव तो भवा तबहन, तो जब धरना तबहन भवा है। अच्छा, उसके बाद धरना हुआ है। हाँ, उसके बाद धरना भवा है, पहले पथराव। आपने ये सब चीजें देखी हैं, धरना वगैरह? हाँ, धरना तो हम देखा है। भाई हमसे कहीं ना बैठ जाओ तो हम कहीं विकलांग आदमी, हम कहाँ बैठ जाए कि? कहीं हिंदू ना हो तुम तो हम कहना आन तो जरूर, लेकिन एक हाथ की हम कैसे बैठ जाए? बिल्कुल, आपकी तबीयत भी नहीं ठीक है, आपको तो फालिस भी मारा गया है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर पहले गाली गलौज होती है, फिर यहाँ पर पथराव होता है, लोग धरने बैठते हैं। उसके बाद राम गोपाल इस छत पे चढ़ता है झंडा उतारने के लिए, फिर उसकी यहाँ पर हत्या होती है। हत्या कैसी होती है? हत्या होती है कि भाई गोली वो लैट्रिन के बगल से मारी गई है। अच्छा अच्छा अच्छा, उसी छत से? हाँ, उसी छत से मारी गई है। फिर उसके बाद क्या उसको खींच के अंदर भी ले गए थे क्या? अंदर तो हम न सर जानने पे थी कि हम, लेकिन हमारे सब हम आंगन में थे तो हमारे छत से उतारा गया था। आवाज सुनाई दे रही थी गोलियों की? हाँ, आवाज तो सुनाई दी है। कितनी गोलियां चली होंगी? गोली तो सर एक ही मारी गई है, मगर चक्कू मारे गए। चक्कू मारी गई और भी चोट है? और नाखून भी उजारे गए, प्लास से नाखून जो है प्लास से उखाड़े गए। मतलब बेरहमी से हत्या की गई है। तो इस तरह से जो हालात हैं आज के वो सामान्य दिख रहे हैं। हालांकि जो मेन अपराधी हैं अभी वो पुलिस के कब्जे में नहीं आए हैं, अभी फरार हैं।
6 लोगों का नाम दर्ज है FIR में, 4 लोग अज्ञात हैं, 10 लोगों का पूरा जिक्र किया गया है। ऐसे में 1 लोगों को भी पकड़ा गया है, बाकी सब लोग फरार हैं। और जो पीड़ित परिवार है उसका भी यही कहना है कि उन अपराधियों को पकड़ा जाए और उनका भी इनकाउंटर किया जाए, तभी जाके हम लोगों को सही न्याय मिल पाएगा। हम इस वक्त बहराइच के महाराजगंज में मौजूद हैं और ये मुख्य बाजार है। ये वही जगह है जहां पर बीते कल और परसों 2 दिन तक जो है वो लगातार हिंसा, आगजनी, उपद्रव हुआ और आज यहां पर स्थितियां क्या कुछ हैं आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। यहां पर पुलिस फोर्सेस की तैनाती, इस पूरी मार्केट के दोनों तरफ जो है वो बैरिकेड्स लगाए गए हैं और ये वही स्पॉट है जिस स्पॉट पर उस लड़के की जो है वो हत्या की गई थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है और आप देखिएगा यहाँ पर आगजनी के भी निशान जो है वो इस वक्त आपको नजर आ रहे होंगे। इस पूरे मार्केट परिसर की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको जहां जहां नजर आएंगे वहां पर आप देख सकते हैं टीन शेड जो है वो पूरी तरह से ये टूटे हुए हैं। थोड़ा सा अगर और आगे आप बढ़ेंगे तो जितनी दुकानें हैं उन दुकानों के आगे तोड़फोड़ जो है वो की गई है। न सिर्फ तोड़फोड़ बल्कि अगर इस गली में आप नजर डालेंगे तो यहां पर जो वाहन खड़े थे उन वाहनों को भी जो है वो आग के हवाले किया गया है। मेरे जो पंकज आपको तस्वीर दिखाएंगे कि यहां पर इस गली के अंदर 2 वाहन जो है वो खड़े हुए हैं, इन वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया गया। और ये देखिएगा ये जो दुकान थी इस दुकान पर भी उपद्रवी जो है वो पहुंचते हैं और इस दुकान के अंदर जो रखा हुआ सामान है उसके साथ भी तोड़फोड़ जो है वो की जाती है। और आप देखिएगा ये महाराजगंज बाजार में यानी कि पूरी तरह से कल और परसों 2 दिनों तक यहां पर जो आगजनी और उपद्रव हुआ उसके सबूत अभी भी आपको जो है वो नजर आ रहे होंगे। ये देखिएगा यहाँ पर जो गाड़ी है उसको भी यहाँ पर ईंट पत्थर के जरिए जो है वो तोड़ा गया है। इसकी टंकी जो है वो आपको पिचकी हुई नजर आएगी और आप देखिएगा ये बड़े बड़े जो है वो ईंट जो है वो फेंके गए थे इस पूरे इलाके में उपद्रव के दौरान और इन्हीं के जरिए इस पूरे इलाके में जो है वो कोशिश यही थी कि यहाँ पर जो है वो उपद्रव की जो कोशिश की गई थी उसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। ये महाराजगंज का इलाका है और आप देखिएगा यहाँ पर पुलिस प्रशासन के तमाम जो है वो बड़े अधिकारी यहाँ पर मौका वारदात पर लगातार पहुंच रहे हैं और स्थितियां सामान्य रहे इसको लेकर हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो इस वक्त यहाँ पर पहुंची हुई हैं और इसके पहले अभी हमने आपको दिखाया कि एसपी जो है वो भी इस इलाके में पहुंची हुई थी और यहाँ पर उन्होंने पहुंचकर स्थितियां क्या कुछ है, स्थितियां कंट्रोल है या नहीं, इन तमाम चीजों को लेकर जो है वो इस पूरे इलाके में जो है वो निरीक्षण करने के बाद ठीक यहां से आगे यानी कि महासी की तरफ वो रवाना हुई हैं। लेकिन अगर तस्वीर हम आपको दिखाएं तो ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि कल और परसों देर रात यहां पर जो उपद्रव हुआ उसके निशान अभी भी इस महाराजगंज बाजार में आपको जगह जगह नजर आ जाएंगे। The situation clearly, of course, remains tense and Republic TV will continue to get you the facts from Ground Zero, viewers. Don't go anywhere. We'll be right back after a very short break, viewers. And our coverage continues, as does the live and breaking. The TMC Neta Kalyan Banerjee at it again. Now he mocks the junior doctors who are protesting and demanding justice, calls it fast unto hospitalization. मुंबई एंट्री पॉइंट पे महाराष्ट्र से लोग आते हैं और मुंबई एंट्री पॉइंट पर टोल नाका पर ट्रैफिक जाम होती थी। लोगों की मांग पिछले कई सालों से थी और कई लोग कोर्ट में भी गए थे और उसमें कोर्ट में जाने वाला मैं भी हूँ। तो आज मुझे समाधान भी है, खुशी भी है कि आज मैं मुख्यमंत्री के कार्यकाल में, हमारे महायुति सरकार के कार्यकाल में आज
ये लाखों जो कार प्रवासी है, लाइट मोटर प्रवासी है, उनको टोल में से माफी दी। This is Republic Kuchina Studio, your one-stop destination for all the breaking news and updates. I'm Deepak Suresh Kumar. Let's get started. Director, the taste of success. एक सपना था कि हॉकी इंडिया दोबारा से रिवाइव किया जाए, ताकि फ्यूचर जो हमारे स्पेशली यूथ खिलाड़ियों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले एक्सपोजर के लिए। और आज उसका ऑक्शन डे है। हम ऑक्शन देख ही रहे हैं किस तरीके से खिलाड़ियों का वहाँ पे बिडिंग हो रहा है, किस तरीके से एक से बढ़कर एक खिलाड़ी उनका बिडिंग प्रोसेस में कैसे प्राइस बढ़ती। Good evening, welcome to Republic TV. Stage is set for the elections and we're going to get the dates, the mega electoral battles as EC announces dates for Maharashtra and Jharkhand. First up, a look at our top headlines. The stage is set for the mega electoral battle as EC announces dates for Maharashtra and Jharkhand. Maharashtra to go for polls in single phase on 20th of November, while Jharkhand in two phases on November 13th and 20th. Counting is on 23rd of November. External Affairs Minister S. Jaishankar lands in Pakistan to participate in the SCO meeting in Islamabad. EM will also attend dinner with Pakistan PM Shehbaz Sharif. That the government of India made a fundamental error in thinking that they could engage in supporting criminal activity against Canadians here on Canadian soil. Canadian Prime Minister alleges Indian government agents involved in spread of criminal activity. But, sir, where is the proof? Amid pan-India outrage, TMC's Kalyan Banerjee mocks doctors' protest, says this is fast unto hospitalization strike. In a major boost for the armed forces' surveillance capabilities, India and the US are set to sign 32,000 crore rupee deal for acquiring 31 Predator drones. Viewers, our top focus, the chorus for justice grows in the Abhaya rape and murder case. The doctors, however, refuse to budge. And while this happens, the TMC leader Kalyan Banerjee has openly mocked the hunger strike by the doctors, questioning their determination. In a statement, he mocked the hunger strike and he said, "This is a hunger strike until hospitalization." আমরণ অনশন কোথায় আর রইল? অনশন আপ টু হসপিটালাইজেশন। আমরণ কোথায়? 3 দিন করে অনশন হচ্ছে, তারপরে হসপিটালাইজড হয়ে যাচ্ছে, খাচ্ছে দাচ্ছে আবার বেরিয়ে যাচ্ছে। দমই নেই। এই তো কালকে আজ সকালে দেখলাম উত্তরবঙ্গের একটা ছেলে অনশন শুরু করেছিল, সে তো বিকেলের মধ্যে হসপিটালাইজড হয়ে গেছে। আমরণ অনশন কোথায় আর রইল? অনশন আপ টু হসপিটালাইজেশন। আমরণ কোথায়? 3 দিন করে অনশন হচ্ছে, তারপরে হসপিটালাইজড হয়ে যাচ্ছে, খাচ্ছে দাচ্ছে আবার বেরিয়ে যাচ্ছে।
দমই নেই। এই তো কালকে আজ সকালে দেখলাম উত্তরবঙ্গের একটা ছেলে অনশন শুরু করেছিল, সে তো বিকেলের মধ্যে হসপিটালাইজড হয়ে গেছে। And Kishle is joining us live from our Bangla headquarters and studio. Kishle, give us more details, because this seems like the TMC openly now mocking these doctors who are on a hunger strike. Well, the TMC has been doing it. We saw several TMC MLAs, MPs threatening the doctors, mocking them. Now Kalyan Banerjee, such a senior Trinamool MP and leader, and also a very close aide to Mamata Banerjee. He is very close to Mamata as well. He has come out with a statement saying that what kind of fasting is this? This is not fast unto death, but this is fast unto hospitalization. He is also asking questions about the resolve of the doctors to continue their fasting, and saying that this is just a mockery of fasting. This is how Kalyan Banerjee mocks the junior doctors who are fasting for 11 days now. 5 of them are in hospital in critical condition. They are fighting for their lives. On the other hand, 6 of them are still in the fasting stage, where they are fasting for their demands to be fulfilled. And what are they asking for? They are asking for safety and security, and they are asking for justice for Abhaya. And this is what they get. What they are getting is these kind of taunts and mocks by the TMC leaders, and Mamata Banerjee doesn't come out with one single statement about the doctors fasting. In fact, we can remember that Mamata Banerjee went to their stage in front of Shastro Bhavan in their Moncho, and she said that I am your Didi, I am your elder sister. If you have any problem, you can come to me. That is what she said, quote unquote. But now, where is the Didi when the doctors are falling sick and being taken to ICU? And your party leaders, if we talk about Mamata Banerjee, your party leaders are mocking them, saying that this is just a mockery of fasting, and that the doctors are just fasting unto hospitalization. So it's a clear case of how the TMC is exposed in a way that shows to the world that they are completely in apathy with the cause of the doctors, and they don't really care about the doctors, whether they're fasting and what is their health condition right now is. This is absolutely shocking. I, Kishle, also want to get in the sense, as the chorus grows for justice, people in Chandigarh also joining these doctors. Across India, we are seeing once again this. But what is the Mamata Banerjee government really thinking? The Chief Secretary yesterday said we would meet them. But what is the plan that they have in mind? And how do you think they're going to try and reach out to these doctors? Well, Rhythm, at one hand, the whole country is coming together to protest against the state government's apathy. On the other hand, yesterday the Chief Secretary had a meeting with senior doctors, and there the Chief Secretary claimed that 7 of the 10 demands have been fulfilled. But rest of the 3 demands, which are the most crucial ones, including the fact that how the top officials should be removed from their positions who are corrupted, he said he cannot give any timeline of when those can be achieved. So he, in a way, he did not give out any timeline and assurance to the senior doctors. And later on, he gave out a soundbite saying in a very casual way that we request the junior doctors to take back their fasting. Thank you very much. And he went away. So it completely exposed that at one hand, at the party level, the TMC government, the TMC party is completely in apathy with the doctors. They don't care about what's happening with the doctors. They are in fact mocking the doctors. On the other hand, in administrative level, the TMC government is running West Bengal, so the administration is also under Mamata Banerjee, who is also the TMC's chief. So on the administration level as well, there is complete apathy, and which is exposed by the soundbite of the Chief Secretary, where he doesn't give any solution but comes out with saying that I'll request them to come out of fasting, and then he leaves. So that is how they are dealing with the whole situation, and the junior doctors are still now fasting. On the other hand, there is a huge Droho carnival or carnival of protest happening in Kolkata right now, even as the Chief Minister observes Durga Puja carnival, her personal program, her West Bengal government's program, her own brainchild. She's in that stage. On the other hand, the doctors are right now on the streets observing the Droho carnival of the carnival of protest.
fast rhythm. All right, Kishle, I also want you to stay with us as viewers. We tell you Republic exclusively spoke to National President of Indian Medical Association on the doctors' protest. Listen to what he said.